So, as you were saying, as I was saying, कि arbitration is again a supplemental process to litigation. उसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इन्वॉल्व हो जाएं as a litigator as well, as a party as well. If you're ever in a dispute, um, you can get into litigation, arbitration through litigation even, और उसको आप adopt कर सकते हैं. But again, it is up to the parties that are involved within it. ठीक है, वो if they're agreed, तो वो if they're in agreement, obviously there is no issue. But if they're not, again, this is a voluntary setting. लेकिन इसमें जिस तरह यूके में वुल्फ रिफॉर्म्स, अगर आई थिंक किसी ने उनके बारे में पढ़ा हो, लॉर्ड वुल्फ, उनका एक रिफॉर्म था बेसिकली टू से कि once you get into litigation, your first step is to get into arbitration. Litigation आपने register करवा लिया अपना केस. Now the court asks you, have you been into litigation? Have you been into arbitration? आप कहते हैं नहीं. कोर्ट आपको डायरेक्शन देती है कि जी आप जाएं आर्बिट्रेशन में, जरा सॉर्ट आउट करके आएं. जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया एंड आई बिलीव पाकिस्तान में भी एक सालसी काउंसिल होती है, या जिसको आप बोलते हैं एक मीडिएशन सेंटर फॉर मैरिजेस, जहाँ पे आप खुला जब वो रजिस्टर करते हैं या डिवोर्स रजिस्टर करते हैं, तो the court says के go for the mediation council, go to the mediation council and resolve, try to sort out things. उसी तरह civil courts, خصوصا in the UK, and commercial courts in the UK do this by saying to other parties कि यार आप जाएं. अब दो चीजें होती हैं इनमें से, अगर पार्टी जाना चाहती है एंड द प्रैक्टिशनर और द लिटिगेटर सेज कि नहीं नहीं इसमें जाने की क्या जरूरत है, टू थिंक यार ओहो ये तो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा एंड इसमें जो है मुझे कोई बेनिफिट नहीं है एज अ बिजनेस. ठीक है, वहां पे कोर्ट एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है. जैसे मैंने आपको कहा, कोर्ट ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और कहा कि नो, दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट करेक्ट, कि आपने प्रॉपरली अपने क्लाइंट को एडवाइस नहीं किया. एंड आई बिलीव उन वकील साहब को फाइन भी हुआ, एक हेफ्टी फाइन हुआ. बट दिस इज द यूके. पाकिस्तान में इफ यू डू दिस, कोर्ट्स, एंड इंडिया में इफ यू डू दिस, कोर्ट्स आर कमिंग टू दैट स्टेज जहां पे वो कहते हैं नहीं, sort out things rather than elongating and prolonging a process, litigation का, आप sort out करें. ठीक है, एंड वो sort out करने में एक तो नंबर वन आपके कोर्ट का फायदा है, नंबर टू लिटिगेटर का फायदा है कि he can focus, basically he can focus नहीं on he can focus on himself, and he can focus on his practice and make his practice better, rather than taking dates, rather than आप dates लें या आप जो है adjournments लें, and this is your entire outlook of your practice. You go into in-depth litigation. ठीक है, जहां पे which requires your attention, जिस तरह हाई कोर्ट की लिटिगेशन हो गई, या जिस तरह आपकी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन हो गई, या सिविल जो लिटिगेशन है ऑफ बेसिकली इंटरप्रेटिंग द लॉ. ठीक है, वो लिटिगेशन जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द लॉ इज येट टू डेवलप. इवन एवरी सिंगल डे हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि यार लॉ तो पहले 50 साल से ज्यादा डेवलप हो चुका है. नो, इट हैज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. आर्बिट्रेशन एक्ट को आप ले लें, 1941 का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है इन इंडिया का, आई डोंट नो कि वो ईयर कौन सा है, बट इफ यू होल्ड दैट आर्बिट्रेशन एक्ट, इट इज सो आउटडेटेड, इट इज सो आउटडेटेड कि अभी की टेक्नोलॉजी, अभी की जो आर्बिट्रेशन है, आई डोंट नो इफ यू, सम ऑफ यू माइट नो ओडीआर, द ओडीआर सिस्टम, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. आप अमेरिका में बैठ के यू कैन कंडक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन session, ठीक है, with two parties, if you're the lead arbitrator, or you can be the arbitrator, one of the arbitrators in the three arbitrator panel.
आप अमेरिका में बैठे हुए डिस्प्यूट इंडिया में या पाकिस्तान में या तीनों कंट्रीज में, ठीक है। अमेरिका में आर्बिट्रेटर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में डिस्प्यूट है विद अ गाय इन इंडिया और बांग्लादेश और सम अदर प्लेस और इवन इन चाइना और इवन एनी प्लेस एल्स, एनीवेयर एल्स आपका डिस्प्यूट है, एंड यूर सिटिंग एट डिफरेंट लोकेल्स एंड लोकेशंस एंड you're basically resolving a dispute. That is known as online dispute resolution, which is another method of resolving disputes. So the law is so vast. I mean, the practice is so vast, but the law is taking time to catch up. Okay? So you need to understand कि आपका practice भी, if it remains just to litigation, you would have to then catch up with today's practice, okay, which is an amalgamation or a mixture of litigation and arbitration. आपने इन दोनों को समझना है. It is very much important that you do courses, you get authorization as a chartered arbitrator through various forums. बहुत से भी arbitration के अपने councils हैं या चार्टर्ड बॉडीज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड गो एंड डिस्कवर दिस वर्ल्ड ऑफ आर्बिट्रेशन. एंड इसमें भी बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, कमर्शियल फील्ड्स हैं, लिटिगेशन है, सारी चीजें, एडजुडिकेशन है, बट गो इनटू दैट. सो आई होप today's session was ये आज का सेशन, it was just a taster for you to understand the whole concept of arbitration, the I mean, the entire phenomena that revolves around the practice of arbitration. क्या करते हैं लोग उसमें and कैसे उस चीज को लेके जाया जाता है. It's very simple. It's not complicated. ठीक है. आपको again, जैसे मैंने आपको कहा, एक litigant, एक seasoned litigant होने की जरूरत नहीं है to conduct an arbitration. ये काम जो है हमारे बड़े करते आ रहे हैं पंचायत सिस्टम में. ठीक है. सरपंच जो होते थे या पंचायत सिस्टम गांव में, ये एक बड़ा सिस्टम था. ये कि आप बैठ के बड़े गांव में बैठ के और दे वुड डिसाइड ऑन डिस्प्यूट्स एंड दे वुड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. ठीक है. इट इज the similar practice that has been basically put into the words of statute and that's it. ठीक है. So it's just the same. So you need to be very wise, basically, and very quick on your feet to conduct arbitration. That is the only criteria for conducting an arbitration or mediation or dispute settlement. Okay? You do not need to be well versed with the law. Okay? You just need to understand what the dispute is, how to basically go an alternate way of resolving that dispute. Okay? And how to make people agree on a certain thing. So वो conviction का जो एक है ना कि how much conviction do you have, वो एक element आप में होना जरूरी. And then it's just a process that you need to follow. That's it. Submissions. So 4 steps हैं. Submissions, witness hearing या expert witnesses. ठीक है. उसके बाद presentation of additional evidence and award writing. ठीक है. It's as simple. Keep it simple. इसको इतना litigation जितना आप इसको वो करेंगे, complicate करेंगे, तो वो complicate होता चला जाएगा. But इसकी जो skeleton है, इसका जो skeleton है, वो सिंपल रखें, तो बाकी जितना भी इसके इर्द गिर्द जो भी प्रोसीजर है या जो भी कोई डेकोरम है, वो इंसान को खुद ही आ जाता है विद टाइम. ठीक है. होपफुली दिस इज अंडरस्टैंडेबल. सो एनी क्वेश्चंस? Sir, how do we take any practical assessments in our city? In our city, Hyderabad city, there are less practical assessments in our ADR and other statutes. So how we will be taken if we are in? You will discuss the online distribution, but in different Pakistan and US also most problems in our ADR. They are the wider zones in the Hyderabad city. In Hyderabad, in that narrow sense. Nowadays in Lahore there are too much idea for section, but in our city there are not. What your practical acceptance? What will be? It's a future scope or not? So what you need to realize, what you need to understand is ADR comes from the person
who starts to practice it. If you as a litigant won't practice ADR, it will not be a norm. It will not become a norm. Do you get me? So if you as a practitioner do not tell your clients that, there's an alternate way of resolving a dispute, if you do not tell them this, and if you tell them that in a place like Hyderabad, forget arbitration, let's go to litigation. That's the first instance response of every advocate, every litigant that I've ever met. It does not matter where you're from. You're from even in the UK. The first instance thing that a person wants is to litigate because they've trained for it. You've not trained, no one has trained for arbitration or mediation or ADR. This is why we do not understand the scope of it. Once we train ourselves to become an ADR specialist, we understand the scope. And then we understand to advocate for the scope as well. So in places like Hyderabad, where there is no person who's uh, who wants to basically get into ADR or a process like ADR, you become the first person. Start small. Don't go for a constitutional or a city level practice. Start small with your clients. Let them, start litigation, and then while you're in the process of litigation, put an option there. I know a lot of so I mean one of my stories is that when I was a junior counsel in a case, we were in a rigorous kind of litigation. And what I suggested to my senior counsel is that why can't we go for litigation? He said, it's fine. Come on. Okay. So uh, to go for litigation, you need to go to the other party's lawyer and make him agree to that. I was like, okay. I went to that party. I went to that lawyer. I went to that advocate, and I told him that, we can resolve our differences, your clients and mine, through mediation. How about that? So he was at first taken back. He was like, no one approaches the, uh, opposing counsel outside of court. So he got a bit, um, startled. But once I told him that, he understood he understood my point, and we went for a successful mediation. So it is just you getting that word out there. I hope that makes sense, Pradeep. Sir, clear. You says you start from our city, then you have the make a is Yes. make a not to make a complicated, make a simple to tell them what is idea. Make a simple process. Make a simple process for people to easily access. Let people easily access arbitration and mediation. Start from family disputes. A lot of the times there is just a small misunderstanding created by a third party. What you can do is, as a mediator, go and sit with them and tell them that these are the issues. Can you work it out? If they say yes, we can, mediation done, finished. So you've done your part, and you grow from there basically. So it is from your practice that you will grow, and you will make a word, and you will make a stance for yourself and for others that mediation is a process that can be taken on. So hopefully that I mean answers your Thank you so question. much, sir. No worries, no Thank you. worries. Okay, so Fahad, sir, how to be an arbitrator or mediator in Pakistan? Is there? Yes, there is. So there is now a very huge body. I'm not marketing for them. It's just because I am a part of that body as well. That is the Chartered Institute of Arbitrators. So you go to their website, Chartered Institute of Arbitrators, you grab onto a module, a course, a starter module, and you sign on for it. You sign up for it. You take that course and you give their exam. Once you've given their exam, you attain the status of an associate
in Chartered Institute of an associate of Chartered Institute of Arbitrators, which is also known as ACIARB. So you gain that certification, then you grow yourself into that practice, and then you become a member, a fellow, and then a chartered arbitrator. So that's how you basically attain that certification. It is open for uh, India, it is open for Pakistan, it is open for Bangladesh, it is open for the entire world, basically. Every single person recognizes that body, the Chartered Institute of Arbitrators. It is a UK body, but it has its branch offices in Pakistan, and I believe it is in India as well, it is in Bangladesh as well, it is in America, Canada, any place that you are, you can access it and you can become a part of it. So, yeah. Any other questions? Every area of law. So in civil litigation, you can use arbitration. In some criminal matters, you can use arbitration. In family matters, you can use arbitration. In maritime matters, you can use arbitration. In construction matters, you can use arbitration. Um, yeah, so you can use arbitration in every field of law, in almost all fields of law. Where there is a dispute, there is another way of resolving that dispute. So, I mean, keeping that in mind, there is room for arbitration in every field of law. It means to be an arbitrator, there's no specific. No, there is a specific certification, but you do not need certification to be an arbitrator. There is a certification, as I said. You get certified from the Chartered Institute of Arbitrators or different arbitration institutions of the world when you basically start practicing. With becoming a chartered arbitrator from a recognized body, basically get recognition in your practice that yes, he is a recognized arbitrator of a recognized body. But if you aren't even a person who's basically recognized by any one of the bodies, it's fine. As I said, you do not need a degree to be an arbitrator. You can be an arbitrator in your position as a litigator, as an advocate, or as a barrister, or as a solicitor, or as anyone else. So it's quite simple. Yeah. Hopefully that answers every single question. Um, are there any other questions from anyone else? Sir, may I? If you Yep, can. yep. But What is difference between the arbitrators and in our panchayat system? Mostly they are the simple complicated. there is no difference. There is absolutely no difference. Why? Because in your panchayat system, they are arbitrating. They are the arbitrators. So they're just take them as arbitrators of a village, and you are basically the same sarpanch or a part of the same panchayat system within a city or within a city sitting or within a city arrangement. So you're basically doing the same work that's done in your villages, in our villages. You're doing the same work in a city. So if you don't live in a city, you live in a village and you're basically an advocate, you will be looked on as as a beacon of hope that a litigant who usually does not go for arbitration, he is advising arbitration. Do you get me? So I mean, in our Asian culture, when you go into litigation, you just want to go into litigation. You don't want to resolve an issue. This is the layman approach. But as an advocate, you can basically advocate for this. You can raise your voice and say that no, litigation is not always the answer.
Sometimes arbitration is, or mediation is, or dispute resolution is the answer. Hopefully that makes sense. Sir, then we have the system. Then you see the mukhi, if they are mukhi or if we the panchayat system, they are the more higher than the other client. They are not listening as they listen. If you are seeing our Kashmir, Kandakot, they are other system. They are the main head body. It's more controlling body. Then if you are saying they are wrong, they are saying no wrong. This is not wrong. There is the most compulsory they are facing. What are you in this topic? What are your scenario? What you are thinking? I If you didn't are wrong, understand. then सर अक्सर क्या होता है कि बच्चों में जो भी हमारे आई एम ट्राइंग टू माय बेस्ट इन स्पीक इन उर्दू नहीं नहीं, अक्सर क्या उर्दू में होता है बताएं, कि उर्दू जो में बताएं, हिंदी में बताएं, कोई मसला नहीं। सर अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ पंचायत सिस्टम तो बनाई जाती है तो उसके बाद जो जिसने कुछ भी नहीं किया होगा जिसने ज्यादा से ज्यादा आपने नसरुल्लाह गादानी का सुना होगा तो उन्होंने भी सही इस तरह से कह रहा था कि है ना सरदार सिस्टम जो है ना मोर पावरफुल है तो सरदार जो फैसले दे दिए तो उनको जो है ना मोस्ट पावरफुल समझा जाता है तो गलत हो सही हो उसको नहीं देखा जाता ये वो हाँ, से वो पाकिस्तान मैं आपका मसला समझ गया। तो वो सरदार को खुश करने के लिए वो सरपंच जो है वो उसका फैसला इस तरह लेता है, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर जी जी, ऐसे ही। अच्छा, तो उसका आसान हल है। हमने अभी बताया, मैंने अभी आपको कहा कि लिटिगेशन में, आप जब लिटिगेशन में जाते हैं, लिटिगेशन वाला दरवाजा वो फिर भी खुला हुआ है, आप लिटिगेशन में दोबारा भी जा सकते हैं। ठीक है ना? सो हाँ, जिरगा सिस्टम जो है, बिल्कुल वो जिरगा सिस्टम, वो वाली आपकी बात सही है। वो जिरगा सिस्टम अब नहीं चला। जैसे मैंने कह दिया ना कि वो किसी का हक, मजलूम इंसान का हक जो है वो नहीं मिला उसको। ठीक है, जो जिरगा सिस्टम है उसमें मजलूम इंसान का हक नहीं मिला। आपने क्या किया, उस मजलूम इंसान को पकड़ा, आपने लिटिगेशन चले गए, वो दरवाजा तो फिर भी खुला हुआ है। वो दरवाजा नहीं बंद होता। ये सिर्फ जो आर्बिट्रेशन है, ये मीडिएशन है, ये सिर्फ एक हल्का दरवाजा है जिससे आप एक किसी का किसी को उसका हक दे सके। पंचायत का मकसद या जरगे के मकसद जो था एक टाइम में, और अभी भी, जब अच्छे जरगे होते हैं जहाँ पे अच्छे बड़े बैठे होते हैं, उनका मकसद ये था कि जी आप इसको जो है ना, इन्हीं के डिस्प्यूट रिजॉल्व करें और किसी का दिल भी ना दुखे। ठीक है? जिरगों में जब आप एक साथ बैठते थे, जब बड़े बैठते थे, तो आप यानी कि अपने सारे दुख दर्द उनके सामने रखते और कहते कि यार हम क्या करें। और फिर जब वो डिसीजन हो जाता था तो सारे फिर उसके बाद अपना कारोबार साथ में ही करते थे। गांव में लेन देन सब कुछ चल रहा होता था। जिसके साथ आपका डिस्प्यूट था उसके साथ भी आप उठ बैठ रहे होते थे, खा रहे होते थे, खाना खा सब कुछ कर रहे होते थे। तो वो सिस्टम, लेकिन अगर उस सिस्टम के कोई बरक्स या खिलाफ चाहता है, अगर उसके कोई खिलाफ चाहता है, तो आपके पास अभी भी कोर्ट कचहरी है। आप वो कोर्ट कचहरी को वो अबैंडन नहीं कर रहे। और वो बात सही है कि हाई कोर्ट में, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वो जरगे सिस्टम को, ये मेरे ख्याल से मैंने कई जजमेंट पढ़ी थी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जरगा सिस्टम को थोड़ा सा एबॉलिश करने की कोशिश की थी या कर ली थी। लेकिन एडीआर उस जरगे सिस्टम का एक, मैंने जिस तरह आपको कहा, एक सिटी वर्जन है, एक एडवांस्ड वर्जन है, जहां पे एजुकेटेड पार्टीज बैठती हैं, जहां पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है? जहां पे कोई अगर इन्फ्लुएंस चला भी लेगा तो वहां पे कोर्ट फिर भी है, कोर्ट में आपका केस अभी भी दर्ज है। ठीक है? वो कोर्ट केस आपका फिर भी सुनेगी। आपने नहीं एग्री करना, ठीक है, किसी ने नहीं एग्री करना, तो कोई बात नहीं, कोर्ट में दोबारा चले गए। ठीक है ना? सर क्या तो वो प्रोसेस दोबारा होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एडीआर कर दिया तो हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपीलेबल दे दी कि ये हमारा मसला था हम लोगों ने ये फैसला दे दिया है तो उसके बाद अगर हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती तो हमें फिर सेशन कोर्ट के बाद ही दोबारा चलाने में फिर सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा नहीं 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 नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट, नहीं नहीं, हाई कोर्ट क्या मतलब नहीं एक्सेप्ट करी, किस चीज को नहीं एक्सेप्ट करी हाई? एडीआर को फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट नहीं कर रही वो लोग जो है ना उस जगह इस सिस्टम को अवेलेबल नहीं कर रहे वो बोल रहे हैं कि हमें इस सिस्टम से हम लोग राजी नहीं है ठीक है तो अगर वो यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है सिविल कोर्ट में हम लोग डायरेक्ट कॉपी भेज देते हैं हाई कोर्ट में इस चीज के प्रोसेस में लगाने के लिए कि ये प्रोसेस था ये डिसीजन आया था हम लोग आपको जो है ना इसको फर्दर इंक्वायरी में रखना है तो अगर
जुडिकल सिस्टम को वो एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग पहले ही साल 2 साल इस सिस्टम में, सिविल में इतना टाइम लगा के आए हैं। अगर हम लोग दोबारा इसमें जाएंगे तो हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं? इसको अच्छा, क्या हाई कोर्ट जो आपकी है, क्या वो जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसको भी नहीं रिकग्नाइज करती? सर देखेगी तो सही, पर अगर फॉर एग्जाम्पल हमें वो डिसीजन वो उस चीज, ऐसे कुछ कोर्ट्स हैं जो इस चीज को, आर्बिट्रेशन को आजकल मान ही रहे नहीं रहे। हमारे यहाँ तो इस पे स्पेशली मान नहीं रही है। हमारा जो फैसला आएगा ना, अगर आप कराची से हैदराबाद में फैसला लेंगे, हैदराबाद वाली कोर्ट एडीआर को नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुन रही? एडीआर के पावर हमारे यहाँ बहुत से कम यूज हो रहे हैं। अगर 100% में बात बताई जाए तो 0.25% यूज हो रही है एडीआर। देखिए, उसका भी एक हल है ना। आपने एक कॉम्प्रोमाइज डीड सुनी है? कॉम्प्रोमाइज डीड क्या होती है? नहीं सर। अच्छा, बेसिकली सिविल कोर्ट्स में या फैमिली फैमिली मैटर्स में एक कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, आपने लिटिगेशन की, उन वो आपस में बैठे, उन्होंने कहा यार नहीं मामला चल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। पाकिस्तान में यूजुअली कॉम्प्रोमाइज डीड होती है, आई एम श्योर कि इंडिया में भी होगी। कॉम्प्रोमाइज ये बहुत ज्यादा एक सिमिलर एक सेटलमेंट डीड होती है बेसिकली, जो आप कोर्ट में सबमिट करते हैं कि जी ये मामला हम आगे नहीं चलाना चाह रहे क्योंकि दोनों पार्टी सेटल कर चुकी हैं आपस में, बाहिमी रजामंदी से, यानी कि आपस में राजी होकर वो राजी हो गए और वो अभी लिटिगेशन नहीं करना चाह रहे, तो कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी हो, वो क्या करेगी? वो कहेगी नहीं 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 जी, लिटिगेशन दोबारा करें नहीं। सो सेटलमेंट, वो कोर्ट का इसमें एम्बिट नहीं आता। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो कुछ नहीं कह सकती कि अगर अगर दो पार्टी सेटलमेंट करना चाहे, ठीक है, उस कोर्ट के खिलाफ, उस ऑर्डर के खिलाफ, जब वो ऑर्डर दे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं उस ऑर्डर के खिलाफ कि जी उन्होंने एडीआर नहीं करने दिया। एज पर दी आर्बिट्रेशन एक्ट, लॉ के खिलाफ नहीं जा सकती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लॉ के खिलाफ नहीं जा सकती, वो लॉ को इंटरप्रेट करने का काम है उनका, लॉ को तोड़ने का काम नहीं है। आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आई थिंक वो एग्जिस्ट करता है। उसमें अगर एक दो पार्टीज जो है वो आर्बिट्रेट करना चाह रही है, मुसालिहत करना चाह रही है, ठीक है, आपस में रजामंदी करना चाह रही है, तो नो कोर्ट इन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री वो उसको रोक सकती। ठीक है, कोई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि हम नहीं मानते। हाँ, वो उस प्रोसेस पर उंगली उठा सकती है कि ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं हुआ, आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हुआ, एज पर दी एक्ट नहीं हुआ। अगर आप एज पर दी एक्ट आपने आर्बिट्रेशन की अपील डाली हुई है कि आपने कहा है कि जी हम आर्बिट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट कहती है कि ठीक है, एज पर दी आर्बिट्रेशन रूल्स आप आर्बिट्रेशन कंडक्ट करेंगे, और अगर आपने नहीं कंडक्ट किया तो वो नहीं मानते उसको। लेकिन कोई कोर्ट भी, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये नहीं कह सकती कि जी वो जो है हम एडीआर नहीं छोड़ना, यानी कि हम नहीं करने देंगे। दे कांट से इट, क्योंकि लॉ है उसका, लॉ ऑफ द लैंड, promoted by courts either in Sindh or any other province. In Hyderabad, there are almost zero cases of ADR. हाँ, तो दे कैन नॉट डिनाई, दे कैन नॉट, कोई कोर्ट भी एडीआर का, अच्छा एडीआर अगर जीरो केसेस है ना ऑफ एडीआर, ठीक है, तो वो केसेस तो पहले आप बनाना शुरू करें ना, कि पहले तो एडीआर की तरफ जाएं। कोर्ट, लेट्स सी वो क्या कहती है, कोर्ट क्या कहेगी कि जी नहीं एडीआर नहीं कर सकते आप कहें कि जी लॉ है, हम तो लॉ के मुताबिक चल रहे हैं। सिविल प्रोसीजर में भी आई थिंक उसका एक उसकी एक शेक है, जी जी सर। जिसमें वो वो कहते हैं कि जी एडीआर, जी है सर, बिल्कुल है, उसका एडीआर का पूरा चैप्टर बना हुआ एक प्रॉपर आपको ऑर्डर है मेरे ख्याल से एडीआर का। ठीक है, पाकिस्तान है। जी जी। सिविल प्रोसीजर में भी है, इंडिया सिविल जी प्रोसीजर जी। में भी है, तो वो आपने लेके चले। अभी अब क्रिमिनल केस में, अब क्रिमिनल के कुछ ऐसे केसेस हैं, मर्डर केस है, मर्डर ट्रायल है, या आपका रेप मैटर है या कोई, उसमें एडीआर नहीं हो सकता ऑब्वियसली। अब उसमें कैसे एडीआर करेंगे? वहां पे तो एक किसी का हक मारा गया ना, किसी किसी के साथ ज्यादती हुई, कुछ हुआ, तो वो उसमें एडीआर नहीं। यस, इन सम क्रिमिनल मैटर्स उसमें एडीआर हो सकता है, जैसे थेफ्ट में, अगर यार वो बंदा कहता है चलो ठीक है मैं सेटल करना चाहता हूँ, मैं ये मुझे इतना डैमेजेस दे दे, मैं इसको ये मुझे वापस चीज दे दे, ये कर ले वो कर ले, एंड इट इज रिजॉर्ट, ठीक है, वो हो सकता है। कुछ जो क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट हैं उसमें आप एडीआर नहीं कर सकते। अच्छा जी, क्या है,
ओनली वन। उसकी पूरी टीम हो सकती है उस आर्बिट्रेटर की, लेकिन ओनली वन। वन वन आर्बिट्रेटर और वन आर्बिट्रेटिंग पार्टी फ्रॉम वन साइड, एंड वन आर्बिट्रेटिंग हेड आर्बिट्रेटर एक ही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि वहां पे एक प्रॉपर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, अनटिल एंड अनलेस इट इज अ वेरी ह्यूज मैटर, यानी कि एक बहुत एक यानी कि एक इंटरनेशनल मैटर जब तक ना हो, तब तक तीन arbitrators होते हैं usually, and they can have as many assistants or as many associates or as many teams to basically arbitrate and to help in that process of arbitration. But there will only be either one to three arbitrators. One, यानी कि एक sole arbitrator. Two, if there are यानी कि I mean a panel of arbitrators, and three if there are two arbitrators from either side and one referee arbitrator. That's it. So लेकिन जैसे वो आपने जो बात की, कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी टू डिनाई लॉ। दे कैन नॉट डिनाई लॉ, दे कैन इंटरप्रेट लॉ इन अ वे कि वो उस लॉ को यानी कि उस केस में यूज करें इन अ वे कि यार वो उनकी उनकी जो समझ है उस लॉ की उसको इन्फोर्स कराएं। लेकिन वो लॉ को, एक एग्जिस्टेंट लॉ को डिनाई नहीं कर सकते। वो दे कैन नॉट से कि नहीं जी ये लॉ सही नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, इस पे बड़ी डिस्कशन हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि इस पे नहीं भी नहीं, बहुत आई से। मीन देखो, डिस्कशन, मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कशन करें, मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना वो करें। बट इफ यू वांट टू गिव मी अ कॉल, और इंशाल्लाह हम इसमें बात कर सकते हैं, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। आई मीन अगर कोई रेजोल्यूशन हम निकाल सकते हैं हैदराबाद के इशू का तो हम निकाल लेंगे। इस तरह कोई वो मसला नहीं है। सो ये आई सर मीन, यही यही कहने वाला था कि हमारे यहाँ बहुत सी अवेयरनेस भी बहुत कम, इस चीज़ की बहुत कम है। एडीआर के बेसिस पर हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं अपकमिंग फ्यूचर में। जो भी हमारे हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हम लोग प्रॉपर एक एडवोकेट्स श्योर के लिए श्योर। पूरा। देखो, मेरी मेरी बात सुनो। देखो, आप जो है ना मेरे बहुत करीब हो। करीब इसलिए ऐसे हो कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, एनीथिंग फॉर यू गाइस। आपने दोबारा ज्वाइन करना है, आपने अपने हैदराबाद के कोई भी कितने भी लोग हैं, मैं कहता हूँ 1000 की फौज आ जाए, अगर जूम हमें इजाजत देता है तो हम जो है ना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एजुकेट ऑन एडीआर एंड टू डिस्कस ऑन एडीआर। मैं चाहता हूँ कि देखिए, कुछ प्रोसेसेस मैं चाहता हूँ कि वो एक एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बन जाए या स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाए। एडीआर इज वन ऑफ देम। ठीक है। ये ट्रेनिंग या ये सेशंस करने का मकसद ये था कि हम थोड़ी सी जो है ना एक अवेयरनेस फैलाएं। मेरी और मेरी टीम का मकसद ये था कि हम अवेयरनेस फैलाएं आप लोगों के लिए। ठीक है। सो आई मीन, you're more than welcome. आप सारे, all of you, if you want anyone to join in, I mean, in the future as well. So yeah, why not? Any further questions? I think there are no further questions. Yeah, ठीक है. Perfect. Thank you so much for attending, all of you, and hopefully you have a great week ahead. और नेक्स्ट वीक हमारी एग्जाम होगा। ठीक है। एग्जाम को थोड़ा सीरियस लीजिएगा। एमसीक्यूज होंगे, प्रॉब्लम टाइप, या थोड़ा सा, आई मीन देयर वुड बी जस्ट क्वेश्चंस फॉर यू। आप ओपन बुक है, ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू द इंटरनेट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट एक टाइम लिमिट है ऑफ 24 आवर्स दैट यू हैव टू गिव दैट एग्जाम इन। ठीक है, आपने एग्जाम सबमिट कराना है, वी विल टेल यू हाउ टू सबमिट दैट एग्जाम, एंड सारा वो प्रोसेस हम आपको बता देंगे। But yeah, that's about it. And thank you so much, everyone, for attending all of these courses. And सर hope to एक see दो you सेक्शन again. हम लोगों ने नहीं लिए हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा? जी, एक दो क्लासेस हम लोगों ने नहीं लिए हैं तो उसका क्या वो सारे प्रोसेस होगा? रिकॉर्डेड हैं, सारे रिकॉर्डेड हैं। all of them are on your drive. आपके साथ वो ड्राइव शेयर हुई भी है। अगर आपको वो ड्राइव फिर भी नहीं समझ आ रही, नहीं मिल रही, तो मेरे जो मॉडरेटर्स हैं, अबीर या एनी, उनसे आप रब्ता कर लें, और इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर लेंगे। नो वरीज, दैट्स नॉट अ ठीक है। प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो perfect. मच। Thank you all for attending, and hope to see you again sometime.